Morning, everybody. Morning, sir. Morning, sir. Morning. Okay. Uh, has everybody received the Good morning, ATT? sir. Morning. Has everybody got the ATT? Admiralty Tide Tables? नेगेटिव सर अभी तक डिलीवर नहीं हुई. अरे बाप रे. So how many people don't have it as yet? Sir, today I am receiving, sir, actually. हाँ जी. Manish, sir, today I am receiving, sir. Today Timetable. you are receiving. Okay. Others who still hasn't got? Manish is receiving today. Anybody else? So from tomorrow we can start? Yes, sir. Okay. So tomorrow we will begin. ठीक है. सर बोल तो कोई नहीं रहा सर, किसी के पास नहीं है. अगर किसी के पास नहीं है तो फिर तो then you've got a problem at hand. नहीं सर, आपने बोला whoever not have हाँ. they should raise hand. Nobody is raising hand only, sir. तो that's what I'm surprised ना कि Yes sir, we have. I'm saying whoever not Sir, have. we have, sir. हाँ. So Shubham, you don't have, correct? Yes, sir. I don't have. I have already ordered, but I don't have. It's already Right. been 5 days. Right. Have you checked out when when you are receiving it? I'll check it today, sir. So please do that यार. अभी क्या कर रहे हो आप लोग यार? I told you Okay. whole of last week. I gave you so much of notice. Danny George is also now saying he doesn't have. Fantastic. I announced to मैंने you ऑर्डर किया when, था वो केरला में ये फ्लड के कारण शायद कुछ ये था प्रॉब्लम चल रहा है, आई डोंट नो. मैंने पूछा था, वो कहे कि इस वीक में आएगा कह रहे हैं. do you have the soft copy with you? Do you have the soft copy? शायद है सर, मैं चेक करता हूँ सर. Okay. Shubham, do you have the soft copy with you? No, sir. I'll take from someone who is having. Yeah. Please do. Yes, sir. Please take the soft copy. At least we begin ना. नहीं तो I can't. I gave you how much notice? 15th से मैं बोलता जा रहा हूँ. मतलब it's been how many days? I've been at it. So we are talking about more than 10 days which have gone by for you to react. So your reaction time is something which is you have to chase it. You know, things don't happen on land. अपने आप बैठे बैठाए platter पे तो आएगा नहीं. So I'm giving you one more day. Tomorrow I must begin. Okay. So whether you have a soft copy or whether you have a hard copy or whichever, Yes. soft copies are all available online. में सब आपको सब available है. सॉफ्ट I've कॉपी given you. प्रिंट करवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करवा. So soft copy को या तो print out करा लो या soft copy पे काम चलाओ. Whichever way you'll do it. I'm leaving it to you now because tomorrow I'll begin. Okay. Uh, I'm not going to hold up the whole class for this. I've given enough amount of notice. इससे ज्यादा मैं और डिले नहीं कर सकता. तो कल मैं शुरू कर दूंगा. I'll start tomorrow on this. Okay. And uh, okay, let me start with some of the theory bit now, and then I'll come back to it. So I'm starting off on some theory of stability. GZ curve. It's also called as curve of statical stability. It's also called as moment of statical stability.
cos, and mos. So whether we are talking about cos, curve of statical stability, or we are talking about moment of statical stability, or we are talking about GZ curve, we are talking about the same thing. So curve of statical stability, moment of statical stability, GZ curve. We're talking about the same thing. Okay. Now, what exactly is a GZ curve? So this is theta, the angle of heel. This is corrected GZ in meters. Corrected GZ in meters. So theta will be 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। Others, are you able to see? नहीं सर, ब्लर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। No, sir, it's not clear. It's not clear. Okay. Let me just exit and then come back again. How is it now? अभी भी सर वैसे ही है सर, सर क्लियर नहीं वैसे है ही सर। Still not clear. बीच में सर क्लियर हो रहा है लेकिन वापस ब्लड हो जा रहा है। Acha. Okay. Let me try to use a darker pen also. So can you see it? ब्लर्ड है सर। थोड़ा थोड़ा ब्लर है सर, बीच बीच में दिख रहा है। Acha. So this is a GZ curve with theta along the x-axis and a corrected GZ along the y-axis. And सर ये जीजेड की सर क्या वैल्यू लिखी हुई है सर ये? GZ की वैल्यू है 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5 at intervals of 0.25, corrected GZ in meters. ओके This is corrected GZ in meters. सर वाई एक्सिस पे सर हील है। Y-axis is corrected GZ in meters. ओके सर। X-axis is degree heel.
So ये So what is the ये exact what is the interval of meters on x-axis? X-axis is degree, theta in heel. That is what in is the degrees. interval What's of the interval of meters, sir, in y-axis? बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर. हाँ जी, बिल्कुल नहीं दिख रहा. यस सर, ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा सर. सर बहुत ज्यादा ब्लड है. क्या सर? Okay, just a second. अभी दिखा सर. Is it any better? Any better? No, sir, same. It's blood up. सर सेम है सर, शायद नेट का प्रॉब्लम है सर. सर सर हो गया. वही सर क्लियर क्लियर है सर अभी. हो रहा है सर, नॉट कांस्टेंट. Maybe some bandwidth issue because यस सर, क्योंकि वो कभी अभी क्लियर है, Now little कभी bit कभी अभी क्लियर हो गया. अभी क्लियर हो गया. अभी क्लियर हो गया. chalo. I've just moved the position slightly. Maybe now that is. हाँ, फिर ब्लड हो गया सर. गया सर, गया. गया. Okay. बस अब ठीक है सर. अब ठीक है. Okay. यस सर, यस सर. Okay. Okay. Now I won't shake it. अब इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. ठीक है. Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. So you can write down a GZ curve is a curve drawn by a chief officer with theta as the angle of heel along the x-axis with theta as the angle of heel along the x-axis and corrected GZ in meters along the y-axis and corrected GZ in meters along the y-axis. A GZ curve is dependent on W, that is displacement, and or So depending or depends? dependent. GZ curve is dependent on W, that is displacement, and oblique or kg of the vessel. Kg of the vessel. If any of the two values change, the GZ curve will change.
the GZ curve will change. Hence, it is condition specific. Hence, it is condition specific. Okay. Info obtained from GZ curve. What information do we obtain from GZ curve? First one is GZ max, maximum GZ. This value gives me the GZ maximum. Whatever I read off on the y-axis. Second, angle of heel at GZ max. So, angle of heel, sir. Angle of heel at GZ max. Angle of heel at GZ max. Angle of heel at maximum GZ. This is angle of heel at GZ max. It can be anywhere around 40 degrees. Can be 45 also. Can be 40 also. Anywhere around that. For our merchant ships. Angle of heel at GZ max. Angle of vanishing stability. Angle of vanishing stability. Angle of VS. Angle of vanishing stability. This angle is called as angle of vanishing stability. So approximately, let us say, equal to 75 degrees. How do you define it? How do you define angle of vanishing stability? It is So where it started becoming negative?
So write down, it is that angle of heel. It is that angle of heel at which the GZ becomes zero again. It starts from zero. When it becomes zero again, that angle of heel at which it becomes zero again is known as angle of vanishing stability. That means the stability has vanished. At at which GZ curve becomes zero again, sir. At which the GZ becomes zero again. Okay, sir. At which the GZ curve becomes zero again. At which the GZ becomes zero again. Same thing. At which the GZ curve becomes zero again. Also the same thing. That means there is no more writing lever left for the vessel to come back. So इसके बाद में vanishing stability पे vessel capsize कर जाएगा. इसके बाद डूबेगा for sure, because it has lost its own inherent ability to righten back. It has lost its own inherent ability to righten back. So it will capsize. Range of positive stability. Range of positive stability. ROPS. Range of positive stability. ROPS. Range of positive stability is angle of vanishing stability minus angle at point of origin. In this particular case, which I'm giving an example, Sir, point of origin. angle at point of origin. Okay, sir. Angle of vanishing stability minus the angle at point of origin. So in this example which I'm giving you, point of origin is 0. So ROPS is equal to 75 minus 0. But supposing my point of origin was 10 degrees, then it would have been 75 minus 10. Whatever is the point of origin, that will become my whatever is my point of origin, that So will this become. range will be in degrees of heel. That It'll be in the degrees of angle of heel. Correct. This range is the degrees of angle of heel. Basically, this is determining how much of positive stability is left in me, because that will determine my ability to righten back. GM initial. Sir, 75 degree. Sir, 75 degrees. What it indicates? How much positive stability left in me? That How is much of positive stability is left in me for me to righten back? 75 degrees indicating that. The the second 75, not the first one. The second 75.
और सर पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ सर एक्चुअली? पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन मेरा यहाँ पे क्या है, पॉइंट किस, मेरा कर्व कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। यहाँ तो सर जीरो ही है वैसे नॉर्मली सर। माय ओरिजिन, मेरा कर्व कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, जीरो पे कर रहा है। अगर कोई और कर्व मेरा 10 डिग्री पे ओरिजिनेट करेगा तो तो 65 मेरा हो जाएगा। तो 65 हो जाएगा। तो मेरी रेंज कम होती जा रही है। ओके सर। सर ये 75 को समझा देंगे इन रिलेशन टू हाउ मच पॉजिटिव स्टेबिलिटी लेफ्ट, व्हाट दिस 75 इंडिकेट्स, मतलब उसके रिलेशन में समझा दो सर एक बार। बेसिकली जो कर्व है मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव कर्व जो है, वो कितना मेरी रेंज है उसकी पॉजिटिव स्टेबिलिटी की। ओके वो सर, तो ओके 75 है, इतनी मेरी रेंज है जो पॉजिटिव स्टेबिलिटी ओके की ओके, है। ठीक है सर, उसके बाद सिंक हो जाएगा। ओके, GM initial. GM initial is basically at a fixed value of 57.3 degrees. I erect a perpendicular at a fixed value of 57.3 degrees. I erect a perpendicular. This is a perpendicular which I have erected. Then at the curve, at the point of origin, I draw a tangent to the curve. This is a tangent. This curve has got a concavity up. So I draw a tangent to the curve. The point where the tangent meets the perpendicular, I go left. The point where it meets the x-axis, the y-axis, sorry, that will give me the approximate value of initial GM. I repeat once again. I draw a tangent to the curve at the point of origin. Then from a fixed value, 57.3 degrees, I erect a perpendicular. The place where the tangent and the perpendicular they meet, I go left. Where it meets the y-axis, that is my approximate value of initial GM. Why 57.3 degrees? Because my y-axis is in meters, my x-axis is in degrees. I need to convert the degrees to radian. I know 360 degrees is equal to 2 pi radian, or 1 radian is equal to 360 divided by 2 pi, 57.3 degrees.
or 1 degree is equal to 1 upon 57.3 radian. So we take the value of 1 radian, that is 57.3 degrees. उधर से जो टेंजेंट मिलता है उस पॉइंट पे, वो हमें जीएम इनिशियल देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और आगे जाके हम ये वाली वैल्यू जो है इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने अभी लिखवा दिया आपको। 1 degree is equal to 1 upon 57.3 radian. We'll be using this value आगे जाके। This is the fifth information that we obtain. सर हाँ जी। सर लेकिन ये आया कैसे, मतलब कि ये 57.3 पे अगर अपन डाल देंगे टेंजेंट तो इनिशियल जीएम आ जाएगा, मतलब ऐसे कैसे पता लगा हमको? अभी see, we just have to right now just accept it because this is your degrees. You can, if you have to convert your degrees to radian, you use this. 360 degrees complete circle is equal to 2 pi radian. So 1 radian is equal to, divide your 360 by 2 pi on your calculator, you'll get this value. So the 1 radian ka value you take on your x-axis, and from there you draw the perpendicular, draw the tangent to the curve. That will give you your basically the value, and whatever value you get on the y-axis, that will give you the approximate GM value. Okay, sir. Sixth, something called as writing moment at a particular theta. Writing moment is a product of displacement into writing lever gz at that theta. So supposing I want a writing moment for 20 degrees, and let us say my vessel is a 50,000 tonner. So 50,000 tons into, at 20 degrees, I erect a perpendicular. जहां पे उसने कर्व को काटा, I go left, supposing it comes as 0.75. So जो whatever is your answer, so many ton meter, that is the writing moment. This is the writing moment at 20 degrees. Similarly, for each of the angles, Sir? one can. Sir, ब्लर हो गया है sir, screen is getting blur again, sir. Okay. So what I'm speaking is writing moment at 20 degrees is equal to, let us say, my displacement is 50,000 tons. So 50,000 into the writing lever GZ at 20 degrees. So at 20 degrees, I erect a perpendicular. Wherever it cuts the GZ curve, I go left. Supposing it comes on the y-axis,
at a value of 0.75 meters, supposing, then the writing moment will be equal to 50,000 tons multiplied by 0.75 meter. Whatever is that product, so many ton meter, that will be the writing moment. Is that okay with everyone? सर एक बार नंबर 2 सर थोड़ा समझा देना सर, वैनिशिंग स्टेबिलिटी सर। Vanishing stability is number 3. हाँ सर, नंबर 3 थोड़ा सा ब्लर हो गया था। Vanishing stability is when the GZ becomes 0 again. That point at which the GZ curve cuts the x-axis. That is called as vanishing stability. ओके सर। Point number 7. Sir, in this writing moment, why we took 20 degree? Hanji? Sir, the writing moment, why we took 20 degree? Just as an example. It can be 10, it can be 20. I just took an example of 20 degrees to explain a point, how to calculate the writing moment. Okay. Point number 7. Area under the curve. Area under the GZ curve. Area under the GZ curve have been given. Various areas have been given. So, various areas are there which are given in the stability booklet. So, the vessel needs to meet the IMO's stability criteria. Vessel needs to meet the IMO's stability criteria for various areas which are given under the GZ curve. I'll do this in more detail later. Right now, I'm just writing down one point. And finally, the 8th one is called as dynamical stability, DS. Dynamical stability. सर एरिया अंडर जीजेड कर्व का एक मिनट दोबारा बताएंगे प्लीज। Area under the GZ curve, I've just written IMO has got some stability criterias. So those stability criterias have been given by IMO. I will shortly be doing them with you. तो उस वक्त जब मैं वो किताब जब हमारे पास स्टेबिलिटी बुकलेट्स होंगी हिनशिप की, तो फिर हम उस वक्त मैं ये बताऊंगा इसके बारे में. So stability criteria have been provided by IMO and they are available in the stability booklet. They are available in the stability booklet.
तो जब मैं बुकलेट में घुसूंगा उस वक्त मैं ये बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस वक्त मैं इसकी डिटेल्स जब मैं बुकलेट के अंदर घुसेंगे तो देन आई विल बी टेलिंग यू। ओके सर। अभी मैं बता रहा हूँ डायनामिकल स्टेबिलिटी के बारे में, DS। So write down one paragraph on DS, dynamical stability. DS is the amount of work done. DS is the amount of work done in bringing a ship to the required angle of heel. DS is the amount of work done in bringing a ship to the required angle of heel. Numerically, it is a product of displacement and area under a curve up to that theta. Numerically, it is a product of displacement and area under the curve up to that theta. Its units are ton meter radian. Its units are ton meter radian. It is used in damage stability calculations. It is used in damaged stability calculation. सर ये क्या लिखा है? ds theta equals to w into a theta. Dynamical stability at a theta is equal to displacement into area under the curve up to that theta. इसकी डेफिनेशन हमने यही लिखी है। जी सर। It is a product of displacement and area under the curve up to theta. Its units are TMR. ओके सर। तो वो आपने इसके बारे में लिख दिया है। It is used in damage stability calculations. This is dynamical stability for you. So all these 8 things together determine what is called as intact stability or stability of a ship. सर एक वो होता है सर एंगल ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, ये डेक एज इमर्जन, वो सब अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अभी पहले इसी को संभाल लें। सर ये लास्ट सेंटेंस क्या बोला सर आपने? All these 8 things determine what is called as intact stability of a ship. Intact stability of a ship. All these 8 things, all these 8 factors determine the intact stability of a ship.
ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. So now you write down one question. Write down one question. The GM of a vessel is the single most deciding factor. The GM of a vessel is the single most deciding factor in determining the stability of a ship. Do you agree with the above statement? Justify your answer, giving reasons. Hanji, what do you think? No, sir. Hmm? Why do you say that? सर अभी आपने लिखा है ना सर वो राइटिंग मूवमेंट इक्वल्स W इनटू GZ, तो W भी सर आता है बीच में. अच्छा. और कुछ आता है? No, but आपने ये बोला ना सर, the GM of a vessel statement में. GM of the vessel is the single most. Right. तो बताओ, do you agree with the statement? Yes or no? नो सर. नो सर, जो भी अभी जो हम कर रहे थे वो इज सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जीजेड की वैल्यू, जो कर्व बनेगा उससे स्टैटिकल स्टेबिलिटी. So basically the answer is no. GM is not the single most single factor नहीं है, 7 और फैक्टर्स हैं, टोटल 8 बन जाते हैं. All these 8 factors together determine the stability of a ship. Okay. GM is 1 out of the 8. 7 और है, वो क्या है? GZ maximum, angle of heel at GZ max, vanishing, ROPS, area under the curve, writing moment, dynamical stability. ये सारे के सारे बन के टुगेदर जाके बनते हैं which determine the stability of a ship. So GM alone is not the single most factor. Got the point? So इस क्वेश्चन का आंसर, Yes, sir. ये पूरा का पूरा ये डायग्राम बनाना है, ये 8 पॉइंट लिखने हैं और ये बताना है कि बाकी 7 भी हैं भाई, इसके भाई बंधु, जिनको जो इम्पोर्टेंट है. खाली हम GM नहीं बोल सकते. ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट फाइन? ओके. तो ये थ्योरी क्वेश्चन था 10 नंबर का, 10 मार्क्स का. सो थ्योरी क्वेश्चन. फिर जो आपने लाइन बोला था कि विल ड्रॉ अ टेंजेंट एंड पुट द परपेंडिकुलर, वो सब पूरा लिखना है ना सर उसमें?
कि नहीं खाली बस वो खाली ड्रॉ करके दिखाना है, दैट्स ऑल। उसकी एक एजम्पशन करके डाल देना वैल्यू उसकी। बस दैट्स इट। सो ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है हम्म। उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है सर, कि 0 पे स्टार्ट होगा या 10 पे? अभी करेंगे हम, विल बी डूइंग इट अभी। विल गो अहेड विद द टॉपिक। अभी तो बहुत कुछ होना है अभी होने दो जी सर। कुछ होने दो अभी आने दो। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल कम धीरे धीरे। आई विल पुट इट, I can't bombard you with this thing, because if I bombard you, everything will go overhead transmission. So I'm intentionally doing it very, very slow so that it sinks in. मतलब सर ये ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी नहीं पढ़ी सर, मतलब ऐसा फर्स्ट तो टाइम ही है सब। ऐसा कह नहीं सकते आप, क्योंकि ये आपके सेकंड मेट्स का मैंने रिवाइज कराया है। जी सेट कर, पता नहीं सर, अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। ये क्योंकि सेकंड मेट्स में अगर ARI में किया था तो ये पढ़ा होगा, अगर ARI से नहीं करी थी सेकंड मेट्स तो नहीं पढ़ा होगा। नहीं सर, याद ही नहीं कर पा रहे हैं अभी अच्छी तरह। बट ये सेकंड मेट्स में किया था, ARI से किया था। हाँ सर, एआरआई से किया था, मित्तल सर ने पढ़ाया था। एआरआई से ही किया था सर, लेकिन याद नहीं है। अगर ARI से किया था तो याद करो। ARI से अगर किए थे तो 2 सेक्शन होते थे ARI में। एक सेक्शन में कैप्टन मित्तल पढ़ाते थे और एक सेक्शन में मैंने पढ़ाया होगा। सर हमें मित्तल सर पढ़ाते थे, उन्होंने नहीं पढ़ाया। ओके ठीक है। सो बिकॉज उन दिनों हम 2 सेक्शन रन करते थे, A एंड B। A में मित्तल सर पढ़ाते थे, B में मैं पढ़ाता था ये वाला पार्ट। तो डिपेंड करता है कि अब आपने कहाँ से किया है और क्या किया है, तो याद करो। तो अभी मैंने जो कराया है वो पूरा सेकंड मेट्स का रिवीजन कराया है मैंने, कोई अभी मेट्स का नहीं पढ़ाया काम। ठीक है। यस। तो एक बारी अपनी पुस्तक खोल लेना, नटशेल सीरीज कैप्टन सुब्रमण्यम्स, एंड उसको जरा खोल के उसको धूल वूल हटा देना, और एक जीजेड कर्व वाला चैप्टर को जरा उसकी थ्योरी जरा पढ़ लेना प्लीज। ओके ओके सर। and tomorrow we will start with tide. Okay, and then I'll come back to this topic again after I've done with tides. Then I'll be resuming the topic again. Okay, so please revise this topic, whatever is there. सर ये जो सुब्रा की जो बुक है, जो पहले आती है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो चेंज होके ऑपरेशन लेवल और मैनेजमेंट लेवल हो गया क्या? करेक्ट। तो जो भी आपके पास है, इट्स ओके, वेदर यू हैव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, or whether you have operational and management level, it's the same thing. There's no difference. कंटेंट तो वही है ना सर? कंटेंट वही है। ओके, चैप्टर वही है। हाँ, खाली वो कंसोलिडेशन में थोड़ा सा इधर उसकी लोकेशन जो है वो इधर उधर है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। यस सर, बिकॉज PDF डाउनलोड किया था तो अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आ रहा था ऑनलाइन। हाँ, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ओनली। जी, आई एम यूजिंग दैट ओनली, सो दैट्स ओके। सो उसमें PDF अगर आपने डाउनलोड किया है तो गो टू पार्ट 2, पार्ट 2 में चले जाओ। पार्ट 2 में बिकॉज पार्ट 1 तो सारा सेकंड मेट्स का है ना, तो गो टू पार्ट 2। पार्ट 2 में जीजेड कर्व में चले जाओ। ओके सर। कर्व ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी जहां पे लिखा हुआ है, तो उसमें चले जाओ। ठीक है, राइट सर एक थोड़ा सा डाउट था सर। हाँ जी बोलिए। सर ये चेंज ऑफ डेंसिटी का एक क्वेश्चन था एयरशिप का, उसमें से उसने मेंशन किया हुआ है कि TPC, MCTC डिस्प्लेसमेंट, LCF एंड LBP इन सॉल्ट वाटर एंड वेसल गोइंग फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर। तो सर हम TPC, MTCC को फाइनल में चेंज करेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट उसको हम इनिशियल डेंसिटी में चेंज करके लेंगे ना सर, ये वेसल में नहीं लेंगे?
TPC and MCTC will be for the final destination जहाँ पे भी जा रहे हो. यस सर. तो वो वहाँ पे बदल जाएगा. वहाँ पे उसको चेंज कर देंगे सर. उसको चेंज. और सर ये जो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने सॉल्ट वाटर में दिया हुआ है और इनिशियल तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है बस वही है. ए शेप कर रहे हो. ओके सर. ए शेप कर रहे हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं करेंगे सर. भाई. टेबल तो आपके पास है ही नहीं. नहीं टेबल क्यों चाहिए सर मैं उसके लिए फिर. नहीं क्या मतलब टेबल नहीं चाहिए ना. ए शेप का क्वेश्चन है, टेबल नहीं चाहिए. सॉल्ट वाटर का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है सर और इनिशियल डेंसिटी इज 1.027. इनिशियल डेंसिटी इज 1.027. तो सॉल्ट वाटर का दिया है तो 1.027 की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. हाँ तो वही पूछा उसको डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे ना सर इनिशियल डेंसिटी में. भाई जो भी आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो तो कैलकुलेट करोगे. हाँ 1.027 की डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन कांस्टेंट. फाइनल डिस्प्लेसमेंट. ओके सर. विल रिमेन कांस्टेंट. ओके सर. थैंक यू. ठीक है. ऑलराइट चलो. ओके सी यू देन टुमारो. बाय. थैंक यू सर. या थैंक यू सर. बाय बाय.